Hi friends, welcome back to my channel Only Bible. Presenting up the NCERT based MCQs from the chapter Reproduction in Organisms. Friends, this is the NCERT exemplar that will be solved first, wherein there are 18 questions. In this segment, we will be doing 10 questions, remaining 8, and many more additional will follow. So please follow the series. Do check with the playlist as well. So solving up the MCQs from the chapter Reproduction in Organisms from 1 to 10. On the left hand side, you can easily see that I have taken up the picture of the exemplar book itself. So first we are going to do the questions which have been listed out in the exemplar, and this will help you to get ready for NEET, CET, KVPY, Olympiad, and this will also help the HSC, ICSE, CBSE, IGCSE boards. Question number 1. A few statements describing certain features of reproduction are given below. First, gametic fusion takes place. Second, transfer of genetic material takes place. Third, reduction division takes place. Fourth, progeny have some resemblance with the parents. Select the options that are true for both asexual and sexual reproduction from the options given below. A. 1 and 2. B. 2 and 3. C. 2 and 4. D. 1 and 3. अब देखना आप फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है गैमेटिक फ्यूजन, पढ़ते वक्त आप ऐसे उसको इंडिविजुअली पढ़िएगा एंड एट द बैक ऑफ द माइंड सोचिएगा कि ये करेक्ट है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है. सो व्हेन यू रीड दिस यू विल कम टू द आंसर एंड द आंसर इज C, 2 and 4. Statement number 2 and 4 are these options which are applicable for both asexual and sexual reproduction. सी पहला जो है गैमेटिक फ्यूजन, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगा. सेकंड जो है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, ये दोनों में होता है. पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो वो चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. सो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, दैट इज असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. थर्ड, रिडक्शन डिविजन टेक्स प्लेस. रिडक्शन डिवीजन इज नथिंग बट meiotic डिवीजन. ये गैमीट्स बनते वक्त होता है और गैमीट्स बनते हैं सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो थर्ड स्टेटमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा पर असेक्सुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. फोर्थ पॉइंट जो है प्रोजेनी हैव सम रिसेम्बलेंस विद द पेरेंट्स. तो प्रोजेनी यानी नई पीढ़ी जो नए ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं ये पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, रिसेंबल करते हैं, पूरी तरह से नहीं. इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कंप्लीटली आइडेंटिकल होता है, यानी कि वहां पर इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं क्लोन. पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा मतलब डिफरेंसेस भी होता है और थोड़े से रिसेम्बलेंसेस भी होते हैं. इसीलिए यहाँ पर द स्टेटमेंट्स which hold true for both asexual and sexual reproduction are second and fourth. Question number 2. The term clone cannot be applied to offspring formed by sexual reproduction because dash. A. Offspring do not possess exact copies of parental DNA. B. DNA of only one parent is copied and passed on to the offspring. C. Offsprings are formed at different times. D. DNA of parent and offsprings are completely different. And the correct answer for this question is A. Offspring जो नई पीढ़ी होती है, in case of sexual reproduction इनमें parental DNA की exact copy नहीं होती. Exact copy सिर्फ और सिर्फ asexual reproduction में ही होती है. What I mean to say is that in asexual reproduction, the progeny, the offsprings that are formed, are not only identical to each other, but they are the exact copies of their parent. In other words, they are morphologically and genetically similar individuals. Whereas in sexual reproduction, there involves a fusion of male and female gametes. अब ये मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं ये एक ही इंडिविजुअल से मिल सकते हैं
या दो अलग इंडिविजुअल्स यानी कि मेल एंड फीमेल ऑपोजिट सेक्स से भी ये हासिल हो सकता है, ठीक है। बट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट विल रिजल्ट इनटू द ऑफस्प्रिंग जो आइडेंटिकल नहीं होगा पेरेंट्स से या अमंगस्ट ईच अदर। आइडेंटिकल सिर्फ वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, पर उन्हें भी हम क्लोन नहीं कहते, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सेकंड। Question number 3. Amoeba and yeast reproduce asexually by fission and budding respectively because they are dash. A. Microscopic organisms. B. Heterotrophic organisms. C. Unicellular organisms. D. Uninucleate organisms. And the correct answer for this question is C. Unicellular organisms. See, unicellular organisms they reproduce by binary fission as is seen in amoeba and paramecium. जहाँ पर क्या होता है एक ही सेल के दो टुकड़े बनते हैं या हाल्व्स बनते हैं और हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होकर बनता है, ग्रो होकर एडल्ट बनता है। In yeast, the division is unequal and small buds are produced. मतलब छोटे छोटे बड्स बनते हैं यीस्ट में से जो अनइक्वल होते हैं, वो पहले तो पेरेंट सेल के साथ चिपक के रहते हैं, they remain connected to the parent cell and then they eventually get separated and mature into new yeast cells. Budding is also seen in hydra, ये भी नहीं भूलिएगा। Question number 4. A few statements with regard to sexual reproduction are given below. First, sexual reproduction does not always require two individuals. Second, sexual reproduction generally involves gametic fusion. Third, meiosis never occurs during sexual reproduction. Fourth, external fertilization is a rule during sexual reproduction. Choose the correct statements from the option given below. A. 1 and 4, B. 1 and 2, C. 2 and 3, D. 2 and 4. And the correct answer for this question is B. 1 and 2. See, sexual reproduction के लिए मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जरूरी होते हैं। ये मेल और फीमेल गैमीट्स चाहे एक इंडिविजुअल एक सिंगल इंडिविजुअल से मिले या दो अलग अलग ऑपोजिट सेक्स वाले इंडिविजुअल से मिले यानी कि मेल एंड फीमेल, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है तो गैमेटिक फ्यूजन यानी गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, ओके, यहाँ लिखा है नेवर अकर्स तो ये गलत है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है, इसीलिए यहाँ पर आपका सही आंसर है बी। Question number 5. A multicellular filamentous alga exhibits a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote. The adult filament of this alga has dash. A. Haploid vegetative cells and diploid gametangia. B. Diploid vegetative cells and diploid gametangia. C. Diploid vegetative cells and haploid gametangia. D. Haploid vegetative cells and haploid gametangia. And the correct answer for this question will be D. See, the adult filament of a multicellular filamentous alga, it will have a haplontic life cycle. So, haplontic life cycle है मतलब meiotic division zygote बनने के बाद होता है। So, the filament of this alga has haploid, that is vegetative cells, and also has haploid gametangia. Question number 6. The male gametes of rice plant have 12 chromosomes in their nucleus. The chromosome number in the female gamete, zygote, and the cells of the seedling will be respectively dash. A. 12, 24, 12. B. 24, 12, 12. C. 12, 24, 24. D. 24, 12, 24. And the correct answer for this question will be C. See, gametophytic structure of rice plant मतलब it is single N.
So here it is very clearly mentioned कि small n, single n is equal to 12. So sporophyte, जो आपको मालूम है sporophyte of rice, it will be diploid, यानी 2n. So 2 into 12, that's going to be 24. Female gamete, gametes are always haploid, so that's going to be n again, and that's going to be 12. And zygote, which is always diploid, is going to be 2n, that is 24. Cells of the seedling are also going to be what? Diploid, so that's going to be 24. Hence your answer is C. Question number 7. Given below are a few statements related to external fertilization. Choose the correct statements. First, the male and female gametes are formed and released simultaneously. Second, only a few gametes are released into the medium. Third, water is the medium in a majority of organisms exhibiting external fertilization. Fourth, offspring formed as a result of external fertilization have better chances of survival than those formed inside an organism. And your options are A, 3 and 4, B, 1 and 3, C, 2 and 4, D, 1 and 4. And the correct answer for this question will be B, 1 and 3. In most aquatic organisms, यानी पानी में रहने वाले जो maximum organisms हैं, जैसे कि algae है, fishes है, amphibians है, in all these organisms like algae, fishes, amphibians, syngamy, that is fertilization, occurs in the external medium, that is water, यानी outside the body of the organism. ये body के बाहर इनका fusion होता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं external fertilization. The type of gametic fusion here will be definitely external, right? Now, organisms which exhibit external fertilization definitely show great synchrony between the sexes and release a number of gametes into the surrounding medium, that is water, in order to enhance the chances of syngamy. समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मेल और फीमेल गैमीट्स एक साथ रिलीज ना होते हुए कभी एक फिर बाद में रिलीज होगा तो सिंगैमी के फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफी कम होते जाएंगे. ओके अब ये जो फर्टिलाइजेशन ये बोनी फिशेस में फ्रॉग्स में दिखाई देती and therein we find there is a large number of offsprings that are produced. But इसका एक major disadvantage ये भी है कि जो offsprings बनते हैं they are extremely vulnerable to predators threatening their survival up to adulthood. यानी ये जो offsprings यानी कि नई organisms की पीढ़ी जो बनती है इन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें और कोई बड़े ऑर्गेनिज्म से खतरा होता है, वो खा सकते हैं उनको और वो एडल्टहुड तक शायद नहीं पहुंच पाते. Question number 8. The statements given below describe certain features that are observed in the pistil of flowers. First, pistil may have many carpels. Second, each carpel may have more than one ovule. Third, each carpel has only one ovule. Fourth, pistils have only one carpel. Choose the statements that are true from the options below. A, 1 and 2. B, 1 and 3, C, 2 and 4, D, 3 and 4. And the correct answer for this question is A, 1 and 2. See, pistil may have many carpels and each carpel may have more than one ovule. Question number 9. Which of the following situations correctly describe the similarity between an angiosperm egg and a human egg? First, eggs of both are formed only once in a lifetime. Second, both the angiosperm egg and human egg are stationary. Third, both the angiosperm egg and human egg are motile transported. Fourth, syngamy in both results in the formation of zygote. Choose the correct answer from the options given below. A, 2 and 4. B, 4 only. C, 3 and 4, D, 1 and 4. And the correct answer for this question is B, 4 only. देखिएगा eggs of both are formed only once in a lifetime. ये तो गलत statement है. आपको मालूम है कि human beings में
मेनार्क से मेनोपॉज, हर महीने में एक एग रिलीज होता है, सो ये स्टेटमेंट गलत है। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, ये भी गलत है। आप बोलोगे कि ह्यूमन एग तो स्टेशनरी है, देखिएगा स्टेशनर ह्यूमन एग में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं है, उसमें सीलिया नहीं है, फ्लैजेला नहीं है, पर उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि जब फेलोपियन ट्यूब्स का मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तब ये जो ह्यूमन एग होता है ये स्टेशनरी नहीं रह पाता, इन अदर वर्ड्स इट मूव्स। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड, ये भी गलत है, बिकॉज दे आर नॉट मोटाइल। ओके, सिंगैमी इन बोथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote, यानी दोनों में फर्टिलाइजेशन के बाद zygote बनता है, ये दोनों के लिए करेक्ट है। इन अदर वर्ड्स दिस इज द करेक्ट आंसर। Question number 10. Appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because dash. A. Nodes are shorter than internodes. B. Nodes have meristematic cells. C. Nodes are located near the soil. D. Nodes have non-photosynthetic cells. And the correct answer for this question is B. Nodes have meristematic cells. See, meristematic cells are the cells which are actively dividing. So, propagules जो nodes में से निकलते हैं, ये meristematic cells की वजह से निकलते हैं. अब vegetative propagules are of different types, like leaf buds of bryophyllum, eyes of potato, bulbil of agave, offset of water hyacinth, and rhizome of ginger. ये सब के सब vegetative propagules है. Friends, I'm sure the series will help you. Please subscribe if you're new to my channel. Keep sharing up and keep studying. Thank you.